हमारे ठीक पीछे नेपाल के राजा जिन्होंने नेपाल के साम्राज्य को यूनिफाई किया था, इकट्ठा किया था, पृथ्वी नारायण शाह की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति नेपाल की एकता का प्रतीक हुआ करता था और इस मूर्ति के ठीक पीछे नेपाल की सरकार, सत्ताधीश और उनके दफ्तर हैं। ये सिंह दरबार है, वही सिंह दरबार जहां पे एक वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री, मंत्री और सारा सरकारी कर्मचारियों का सिस्टम होता था। सामने बैरिकेड दिखेगा, अंदर आपको धुआं दिखाई देगा और फायर ब्रिगेड इस वक्त इस सिंह दरबार के अंदर आगजनी के 24 घंटे बाद भी काम कर रही है। तो आप समझ जाइए किस तरह की तबाही वहां हुई। नेपाल के इस सिंह दरबार पर जेनजी प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा स्थापित कल किया था। सत्ता परिवर्तन का चिन्ह आपको वहां उस दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देगा, कैप्चर जेनजी, यानी कि जो जेनजी विनर, ये संभवतः उस वक्त लिखा गया होगा जब जेनजी प्रदर्शनकारी यहाँ अपना जीत का जश्न मनाते हुए जा रहे थे। फिलहाल पूरे नेपाल की सड़कों पे आर्मी की गाड़ियाँ कुछ इस तरह से दौड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। आगे लाल झंडा लगा हुआ है और जिस जगह से ये गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ ये स्थापित हो रहा है कि अब ये इलाका आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है और किसी भी जेनजी प्रदर्शनकारी को किसी भी रूप में सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये एक छोर है जो सिंह दरबार की तरफ आता है, आपको आर्मी वहाँ पे दिखाई देगी मार्च करते हुए। दूसरी तरफ जो एटीएम सेंटर है, ट्रैफिक पुलिस का बूथ था, उसके अंदर से अभी भी धुआं आता हुआ आपको लगातार दिखाई देगा। सिंह दरबार का एक रास्ता, वहाँ पे आगजनी, वहाँ तबाही का मंजर, वहाँ पे धुआं अभी भी निकलता हुआ और आर्मी मार्च कर रही है। ये मार्च इस वक्त सबसे अहम तस्वीर है नेपाल की जनता के लिए, ये भरोसा दिलाने के लिए कि अब सब कुछ सामान्य करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इंडिया टुडे brought you pictures from the streets of Nepal where the violence erupted and the Gen Z crowd took over the entire law and order of the Nepal and Kathmandu yesterday. We gave you pictures as to how violence happened on the streets of Nepal. We gave you pictures as to how every property that was a symbol of Nepali political class was set on fire, whether it be the private property or the traffic installations. And India Today is now giving you exclusive pictures from inside Nepal's parliament, which was set on fire by the Gen Z protesters yesterday. And we are getting you those exclusive visuals from inside the Nepal's parliament, inside the complex, inside the Nepal Parliament House, where the law was drafted and legislations were brought into effect. This is the main entrance of the main complex of the floor of the house, and from here the lawmakers used to come. The Prime Minister, the cabinet ministers would take same steps, but probably they forgot as to why they were brought here. This is the entire grand structure which has been now brought down by the Gen Z crowd, and it's the heat can be felt even 24 hours later. The pictures that we are bringing to you, you can see the pillar structures that have come down, crashing down because of the possibly blast. These are the iron structures which are shattered at this point in time, and from here where I'm standing I can feel intense heat coming from there. The reason being that even 24 hours later what we see is that the flames are still coming out of the Parliament House, and this is the floor of the house. Remember, from where you can see the flames which are still ablaze inside the floor of the house of the Parliament building of the Parliament complex in Nepal. एक बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 30 लोगों का ग्रुप है जो पिलग्रिमेज पे आया था, पशुपतिनाथ में दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जब उसी वक्त नेपाल में सत्ता परिवर्तन होगा। और हमारे ठीक पीछे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से इन्हें अब तक नेपाल से वापस जाना था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ फंसे हुए हैं ये लोग। सब पुणे के लोग हैं। आप अपना नाम बताएं और
क्या कुछ आपने फेस किया है, कितना प्रॉब्लमेटिक रहा, मुश्किल रहा इस पूरे दौर को पास करना? मेरा नाम रोहित घारे है, मैं पुणे से हूँ। अभी तक फ़िलहाल 2 दिन से हम लोग इधर है। अभी तो फ्लाइट तो सब बंद है और जो बाहर का माहौल है वो बहुत डेंजर है। तो हमारा दर्शन तो हो गए पशुपतिनाथ का, अभी मंदिर भी बंद किया है, सब बंद किया है। अभी तो बोल रहे फिलहाल कि 6 बजे के बाद चालू होगा एयरपोर्ट, तो देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। घर वालों से बात हुई? हाँ चालू है, मगर अभी इधर का नेटवर्क भी हाँ खराब है, सब डाउन है। आप लोगों के भी घर में क्या चिंता हुई जब उन्होंने वहाँ समाचार में देखा होगा कि नेपाल में ऐसी स्थिति है और आप यहाँ फंसे हुए हैं? एक तो ये हुआ था, हम लोग वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क का इशू था, क्योंकि इंडियन सिम कार्ड यहाँ पे चलते नहीं, तो घर वालों के पास नंबर नहीं थे। और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे हम लोग का वहाँ पर ये नेटवर्क नहीं था यहाँ पे, तो 1-2 के फ़ोन चालू थे जी, तो दिक्कत शुरू से हो गई घर वालों को कांटेक्ट करने के लिए। उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा था, हमारा उनसे नहीं, तो दिक्कत वहाँ पे आ गई। और उसके बाद हम लोग क्या है, यहाँ पे सब नेटवर्क डाउन हो गए, तो घर वालों के 1-2 के मोबाइल चालू थे, तो उनसे हम लोग सब लोग मिल के कॉन्टेक्ट कर रहे थे। तो 40 से 40 लोग हैं कम से कम यहाँ पे। 40 लोगों का? हाँ 40 लोग का। उसके बाद जब संपर्क हुआ होगा तो घर वालों को भी अश्योरिटी मिली होगी कि आप सेफ हैं? हाँ अश्योरिटी उनको मिली। अभी क्या वो ठीक से अभी क्या हो गया कि एम्बेसी से बात हुई कल दिन भर हम लोग ट्राई कर रहे थे इंडियन एम्बेसी से, तो ट्राई करने के बाद किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था, लगता था तो उठाते नहीं थे। शाम के 7 बजे, कम से कम 7 बजे रहेंगे, तो हमारा फ़ोन कांटेक्ट हो गया उनसे, तो वो बोले कि हम लोग के पास पक्का जानकारी नहीं है, तो जानकारी मिलने के बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपका लोकेशन, होटल का नाम सब भेज के रख दो। वो रजिस्टर कर लिया उन्होंने? हाँ उन्होंने। And joining us now is Amit Bharadwaj, live from the Kathmandu airport. Amit, do tell us, with the international airport opening up now, can we expect the Indians stuck and stranded over there will now get a safe passage home? Anjali, what's happening is that the Civil Aviation Authority in Nepal has decided that, considering that army has taken control of the situation and law and order situation has been reinstated, normalcy has come back in Kathmandu and elsewhere in Nepal, this is the time to reopen the airport. So by 3:30, that a reopening process has already started at the Nepal airport. International airport is right behind me, and the process of whether the passengers, international passengers, including the Indian passengers, Indian tourists who are stranded in Nepal right now, will be able to go back or not, that process will be actually decided by the flight operators. I have just spoken to my sources within Air India. They are now checking as to whether it is feasible for them to begin the operations immediately or not, because Air India had already announced to cancel all their flights from Kathmandu airport, given the fact that airport remained closed and the picture was very glim as far as flight operations are concerned. So the reopening of the international airport, Tribhuvan International Airport in Kathmandu, is subject to the flight operators as well. Flight operator, crew, pilot, their staff will be now allowed to go inside the TIA. And now the operators will have to take that final call as to by when they want to resume the operations. I believe that operators such as Air India could actually take that final call. Maybe they could take the final flight scheduled for the day, or they could eventually begin the operations tomorrow. We are waiting for that confirmation to come from the individual private flight operators from here on. But as far as the entry into the airport is concerned, the staff from the flight operators, crew members, all of that will be allowed. But as far as the passengers are concerned, or those wanting to go back to their home are concerned, they will be allowed inside the TIA only when they have a valid ticket, number one. Number two, that particular flight is flying this evening itself. Only in that picture they will be allowed to enter the TIA. Back to you. Thank you, Amit, for all those details. So we do hope that the flights resume soon and people are able to return home.